Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने शेयर बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम राजीव। थैंक्स, धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks decline around 1%. Sensex falls below 59,500 mark. Nifty slips below 17,800 points. Global equity indices trade mixed and Brent crude prices hover around $88 per barrel level. घरेलू शेयर बाजार में आज फिर गिरावट, लगभग 1% फिसले प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 59,500 के नीचे आया, निफ्टी 17,800 के स्तर से नीचे लुढ़का। दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखा मिला जुला रुख और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल के आसपास रही। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच निफ्टी 17,800 और सेंसेक्स 59,500 के स्तर से नीचे आ गए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 634 अंक यानी 1.06% कम होकर 59,465 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक यानी 1.01% घटकर 17,757 दर्ज हुआ। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में आज बेहतर दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.05% लाभ के साथ बंद हुआ। The Nifty and the Sensex today plunged more than 1%. The key domestic stocks fell amid mixed cues from the global equity markets. The Nifty closed below 17,800 level and the Sensex finished below the 59,500 mark. The NSE Nifty declined 181 points or 1.01% to close at 17,757. The BSE Sensex tumbled 634 points or 1.06% to end at 59,465. In the broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices outperformed the Sensex as both fell marginally. The mid-cap slipped 0.07%, while the small-cap index closed 0.05% up. In the Sensex pack, shares of 7 companies climbed, while 23 fell. Power Grid was the top gainer as it surged 4.9%, followed by Bharti Airtel, which gained 2.6%. Asian Paints rose 0.8%. On the other hand, Bajaj Finserv plunged 4.5%, Infosys and TCS both declined 2.3%, Sun Pharma fell 2.2%. In sectoral indices, 13 out of the 19 sectors fell. Power sector index was the top gainer as it rose 1.3%, followed by utilities which climbed 1.2%. On the other hand, IT sector plunged 1.7%, tech fell 1.5% and energy declined 1.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,678 companies gained, while 1,727 fell. Shares of 79 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 51 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.14% बढ़त के साथ 96.64 पर पहुंच गया।
राजीव, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में दोपहर 3 बजे के आसपास तक लग रहा था कि बिकवाली ही मुख्य रूप से होती रहेगी, लेकिन उसके बाद के कुछ क्षणों में हमने देखा कि अच्छी खासी लिवाली होनी शुरू हो गई। एक तो हम इसे समझना चाहेंगे कि बाजार को जो ये स्ट्रेंथ, ताकत मिली, वो उसके कारक क्या रहे। उसके अलावा जो छोटी मझोली कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है बाजार में आज, क्या प्रमुख कारण है? मनोज जी, आज जो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि बाजार पिछले 3 दिनों से, इनफैक्ट 4 दिनों से घट रहा है बाजार जी। तो जो ट्रेडर्स जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक करके जाएंगे और दोपहर के समय जो डाउ जोन्स फ्यूचर थे जो कि काफी कट के साथ ट्रेड हो रहे थे, वो ऑल ऑफ सडन थोड़ा सा पॉजिटिव रुख हुआ। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आप देखते हैं, बट लेकिन बाजार एसेंशियली पिछले 4 दिन से करेक्शन मोड में। अगर पिछले 2 दिन पहले भी ऐसे ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बीच में तेजी आई और फिर जाते जाते अगले दिन फिर बाजार नीचे खुला। एक्चुअली ग्लोबल हेडविंड्स है जो इक्विटी मार्केट्स को हिट कर रही हैं, इंक्लूडिंग दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। मतलब हिंदुस्तान में भी उसका ही प्रभाव ज्यादा देखेंगे, जैसे कि वो क्षेत्र ज्यादा हिट हो रहे हैं जहां पे कि एफआईज का एक्सपोजर ज्यादा है। तो उसके चलते, ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में जो करेक्शन का दौर है वो चल रहा है और शायद थोड़े दिन तक और चल सकता है। So these weak global cues that you're talking about include, the reason for this include US bond yields and crude at record highs. They are taking a toll on the market, including ours, as you very rightly said. Will you still, Rajiv, reiterate positive views on markets and suggest utilizing dips to add quality stocks? See, the answer lies in your question itself, in the sense when you say quality stocks, I mean, there is no wrong time to buy quality stocks. It's always a good time. See, and no one in this world can perfectly time the market. Well, I am expecting some correction given the fact that there is a global reset happening. Interest rates in US is going to, move up. There is a possibility that we will see some outflows from the emerging markets. In fact, last year we see hardly any inflow in India. And there were months where we saw huge FPA selling. Then the question is, what you consider as a dip. If you look, we had a decent amount of correction at index level in December. Before that, in fact, from October onwards, probably the last quarter was full of correction only. These last 4 days, would I take this just as a dip? I think probably there is some more to come. We might stabilize for a day or two, then when again some numbers come in, how the global situation pans out, depending on that, we might see some more correction over a period of time, and index might move in a broad range-bound manner, with 17,000 being a short support level and 18,500 being a level where it might find tough to cross. And during this period, when it comes to quality stocks, surely, I mean, there is a good enough scope for picking them up. Not only picking them up, but the question is that how long. See, one needs to realize most of retail investors think they are investor, but they want to, when it comes to investing, they don't invest, they want to trade actually. They will look at what's going to happen after 3 months. That is not investing. So if you are an investor looking for good long-term investment opportunities, these dips, even if you don't wait for a dip, doesn't matter. Depends on the stock which you are going to buy, depending on the sector, depending on the business. See, because you don't own a stock, you own a part of business. So which is the business you become a part of when you buy a stock is a question which needs to be answered by an investor when he's buying a stock. So if he's buying let's say, large IT sector stocks which have corrected recently, the probability that he will make more, money in 1, 2, 3 years down the line is far higher than if he buys, let's say, some godforsaken company which is an IBC, and just because it's quoting at 15 rupees and he's got a tip that it will go to 30, and if he buys that, then God helps him. And the probability that he will make money it's literally nil. Okay, we'll continue our discussion with Rajiv after this short commercial break.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ हैं शेयर बाजार के जाने माने विश्लेषक राजीव नागपाल और हम चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार में आज की गतिविधि पर। राजीव, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आज जो ओवरऑल कारोबार हुआ है उसमें कंपनियों के प्रदर्शन पर। आंकड़े बता रहे हैं कि 1678 कंपनियां आज भी कह लें कि फायदे में रही हैं और 1727 हैं वो घाटे में रही हैं। यहां पर समझना हम ये चाहेंगे कि आप लगातार ये कहते हैं कि जब कभी निवेश कीजिए तो लंबे अरसे के लिए निवेश कीजिए, खासतौर से जो हमारे आम निवेशक हैं, श्रोता हैं, उन्हें उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यहां हम ये समझना चाहेंगे कि किसी कंपनी को परखें वो कैसे, और अभी का जो माहौल है उसमें किस क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान दें ताकि अगले साल भर 2 साल के निवेश पर उन्हें अच्छा और सबसे बेहतर लाभ मिल सके। देखिए, सबसे बड़ा पहला पैरामीटर होता है कि कंपनी किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एज अ कंट्री हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है या नहीं है। दूसरा बड़ा है कि वो जो बिजनेस है उस बिजनेस वो कितना ग्रो करेगा, मतलब उसके जो बिजनेस की डिमांड है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टर्म ग्रो करेगी। मनोज जी, इसका जो बहुत संक्षिप्त में जवाब ये है कि देखिए कि अच्छी बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, और इसको अगर मैं समझाने बैठूंगा तो शायद 2 घंटे का एक प्रोग्राम हमको करना पड़ जाएगा संक्षेप में ही। तो इसलिए मैं ये कहूंगा संक्षेप में कि आप देखिए ब्लू चिप कंपनी जिनकी लार्ज बैलेंस शीट साइज है, जिनका ओवरऑल लास्ट कपल ऑफ ईयर कई दशकों से आप देख चुके हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स देख चुकी हैं, और हम उनके बेसिकली उस बिजनेस में कुछ स्ट्रेंथ है, एक कुछ इनहेरेंट एडवांटेज है। आप आईटी क्षेत्र की बात करें, हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है। वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस इन इंडिया। तो एक हमारी वो स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ को कौन सी कंपनी जो है उसको यूटिलाइज कर लेती है प्रॉपरली, कौन से अपने अकाउंट्स बुक्स को क्लीन रखती है, वो सारी चीजें देखकर ही आप ले सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, कि कंपनी ने जब पैसा कमाया तो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया नहीं दिया, कितनी पारदर्शिता वो अपनाती है अपनी किताबों में, और अपनी जो स्टेटमेंट है कितना अपने वायदों पे वो खरा उतरती है, उनकी पुरानी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है। ये एक पूरा प्रोसेस है। और मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डीलिंग विद इन्वेस्टर्स, स्पेशली डे वन, बहुत लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो जाके पढ़ें। देखिए, एक स्किल सेट, एक स्किल रिक्वायर्ड है। इट्स ऑल्सो फुल टाइम जॉब जहाँ पे आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। अब वो अगर आप नहीं कर सकते तो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट आइदर द एबिलिटी और द टाइम और बोथ ऑफ देम, तो उनके लिए बेटर ये रहता है कि वो म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ETF में जाए, इन्वेस्ट करें, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें और भूल जाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हेडलाइन कह रही है, क्या कौन कह रहा है, क्या राजीव नागपाल कह रहा है या कौन XYZ क्या कह रहा है। Rajiv, I like the way you put it. So let's look at the scenario that we have gone through. Just last week, the benchmark indices looked set to reclaim the record highs, and look at today, due to boiling oil prices, or maybe because of the fears of the US Fed action. Rajiv, are you still expecting further downside, and you cannot rule that out? And why am I saying that, Rajiv? Is because the investors will be selective in picking up stocks. So there is going to be further downside. See, if you ask me, in short term, yes, the probability that equity market globally will correct further is very high, because there is a reset which is happening in the interest rate in the world. Inflation across the world due to supply chain disruption, due to rising oil prices. We all think that we only Indians suffer because of rising oil prices. The fact is that the relationship between the disposable income of an American with the rising oil price is extremely high. There also the disposable income gets impacted pretty high. I mean, because
there also, that what you call the fuel part, spending on the one common man spending on fuel is extremely high. So the whole thing is that if the oil prices rises, interest rates happen, we might see a correction of, let's say, another 15% over next 1 year. You have, global geopolitical issues. Let's see. We have stopped talking about, suppose if there is an issue with Ukraine, what will happen to the oil prices? Oil prices continue. I mean, one research house predicting $100 oil prices. The question is that all these things will happen. See, I haven't, in my career of so many years, I haven't seen a single year where there is not one or the other issue. Starting from a plague in Surat in 1994 onwards, to a global financial crisis, to dot-com bust, blah, blah. Every year, I have been hearing one or the other issue. And I remember we started discussing, we probably, when the index was 11,000, it moved down to 9,000. So these correction will form part. I'm of the view that if you are, if you're a professional person who's making his income, you have to distinguish whether you're in market to put your savings and create wealth, or you are in market to generate income and earn your living out of it. So aren't you, to what you are saying, my question is, aren't the market trends confusing? Because no, you were expecting... It's confusing in short term, Rajesh, yeah. I agree. The question is, to me, to be very honest, it's not confusing. I might have a short position in, let's say, an index. So it's not, in short term, volatility will happen. In short term, you will see corrections happening. In short term, you will see some sectors underperforming. In short term, you will see all the things possible which can go wrong, will go wrong in markets, and the stock prices will correct. That is one part of it. But to play that, to take advantage of that, one, never leverage and buy stocks. If you don't have the ability to trade in futures and option market, please do not. And I'm bringing this issue up because at least 10 times in a day, I get SMSs telling, this tip, black tip. I mean, this is mind-boggling. And my experience says that you find this type of crap happening in the information system when market is at peak, and people, in fact, today just before this program was to come, I got a call from someone. My son wants to invest 50,000 bucks. Can you spare 15 minutes to talk to him? I spoke to that kid, and he wants to invest, but then he said, I want to invest for a 15 days period. So I told him, I'll send you some link. Please read this books, and then we'll talk next week. The question is, at this point of time, the desire, the fear of missing out is so high that the probability that you will take a wrong decision if you look at short-term movements is extremely high. And you will not only lose your capital, you lose your confidence. And most important thing in the market is that you should not lose your confidence, because if you lose your confidence in initial years, then you think this asset class is bad, which is not the case. So while I agree with you 100%, this thing is that as a professional investor, I have reduced my desire to take long. If there is a stock which moving up, I probably have more time seller stocks from my portfolio. I am very happy to take a short position than a long position. But that is because that's my full time. That's how I earn my living. Okay. For a retail investor who's listening to this thing, these short term movement will happen. As we spoke in the afternoon, I give you an example of HDFC. I mean, look at it, what this stock has done. Look at the returns which it has delivered over a long period of time, the kind of wealth it has generated. Look at, there's so much Infosys. Look at TCS. And true. So what are you saying, Rajiv? You want people to move from FOMO to JOMO, which is the joy of missing out? Well, right now, joy of missing out of penny stocks. Okay. And the worst part, Rajesh, look at the volume numbers in the stocks. When I look at the top stocks which have top volume, I see stocks of companies I don't want to name are probably either on the literally bankrupt. They have been saved by the government. In some cases, literally they have been bailed out by government for one or the other reason, or have been IBC. I mean, the company last time they made profit was bloody a decade back. So in this condition, I'm more concerned about people not buying. Please stay away from penny stocks, stay away from the yarn which you get on Twitter,
जी or through WhatsApp University. Okay, we'll be taking... श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हमारी चर्चा जारी रहेगी। राजीव जी के साथ बने रहिए कार्यक्रम में। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही है। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 3.4% लाभ में रहा। जापान के निक्की 225 सूचकांक में 1.1% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% ऊपर आ गया। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% घाटे में रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना हुआ था। फ्रांस के CAC 40 में 0.2% की गिरावट दिख रही थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा था। Wall Street's main indices ended sharply lower yesterday, with the tech-heavy Nasdaq confirming it was in a correction after a diverse set of corporate earnings and as investors continued to worry about higher U.S. Treasury yields and the Federal Reserve tightening monetary policy. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both fell 1% and the Nasdaq Composite Index declined 1.2%. Rajiv, there is one school of thought which says that the Fed effect is going to be temporary effect, and there are two reasons that they're giving to it. I would like you to comment on that. The two ingredients are, first, whether the Fed is going to raise rates by more than 3 times, which is what is discounted in the market. And two, will those rate hikes be front-loaded rather than evenly spread? What's your view? I think Fed has been caught on a wrong foot in their assumption of that inflation is going to be transitory. And I think they are going to be, and there is going to be an element of, let's say, political decision making out there also. I think they are going to front load it because they don't want to be given the inflation numbers which are coming, and we have now another phase of Omicron which is hurting the shipping ports. The supply chains are still not back to normal. Forget normal, they're not even 50% of, in some of the crucial parts, they're not even 50% of what they used to be. So I think Fed is likely to be more aggressive with their interest hikes. And that is one reason I think the probability that we will see the markets globally correcting is very, after 30 months, the yield on the German bond went into positive. I mean, they have been consistently negative for last 30 months. So if that is happening, you can figure out that if the interest, risk-free interest is going to be there, then at the end of the day, equities are riskier asset class. So, and the debt money which goes into debt is phenomenally higher than what goes into equity. So, in my thing, I anticipate that probably Fed is going to be more aggressive, and when that realization happens, and then global markets, especially emerging market equities, probably will correct very sharply. But and see, the way capital moves now as compared to, let's say, 15 or 10 years back, it moves much faster from one place to another as compared to 15 years back. That was much slower as compared to today. So, and in that way, I think the reaction will be sharper, but short-lived also. राजीव, हम आपका ध्यान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कह लें कि बैठक चल रही है दावोस में, वहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन को लेकर। शी जिनपिंग ने कहा है कि बहुत तेज गति से जो ब्याज दर बढ़ाने की कवायद चल रही है, उससे
चीन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और इसका असर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि चीन है वो अपने यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती कर रहा है और वो आग्रह कर रहा है कि दुनिया भर के जो नीति निर्माता हैं वो अपने ब्याज दर में कटौती के जो घोषणा उन्होंने की है उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। किस तरह का एक कह लें कि प्रतिरोधी विचार उभरते नजर आ रहे हैं आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था में? हेलो जी हाँ राजीव। मनोज जी, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है और उधर चीन ने कहा है, तो आई थिंक देयर इज नॉट ओनली इन चाइना, प्रॉब्ली इवन इन जापान देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द इजी मनी पॉलिसी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा आई डोंट नो, आई थिंक दैट स्टेटमेंट जो आई है वो दैट इज मोर पॉलिटिकल इन नेचर, इट लेट्स इट पैन आउट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे लगता है कि ये दिस इज वन एरिया विच प्रॉब्ली इन अदर 6 months विल क्रिएट मोर डिस्टर्बेंस इन करेंसी मार्केट विच पैन आउट। इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, सो आई कांट कमेंट विद कॉन्फिडेंस कि क्या हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, वॉलेटिलिटी इन करेंसी मार्केट ड्यू टू दिस डाइवर्जेंस इन व्यू। करेंसी मार्केट पर आपने चर्चा की, तो रुपए पर बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया हम आपकी समझना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, बहुत मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है जैसे कि यूएस पे टाइटन करता है अपनी पॉलिसीज को। Moving on, the oil prices today logged losses of around 0.5% after hitting multi-year high levels in previous sessions. However, Brent crude was still trading marginally above $88 per barrel, while WTI crude prices were at $86.60 per barrel when reports last came in. चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने का मूल्य बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना रहा। अंतर्दिवसीय कारोबार में फरवरी में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 48,380 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा, लेकिन मार्च अनुबंध वाली चांदी 140 रुपए उछलकर 64,550 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। उधर ताजा समाचार मिलने तक न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा घटा, $1,839.90 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी थोड़ी सी कमजोर हुई, $24.20 प्रति औंस के स्तर पर आ गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने हमारे आम निवेशकों के हितों का ध्यान रखा और उन्हें आगाह किया है कई बिंदुओं पर, और हमें विश्वास है कि आपकी सलाह का वो ख्याल रखेंगे। बस यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rajiv, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic stocks decline around 1%. Sensex falls below 59,500 mark. Nifty slips below 17,800 points. Global equity indices trade mixed, and Brent crude prices hovers around $88 per barrel level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.